गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायो का एक टॉपिक है, काफ़ी बेसिक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। एंड द बेसिक टॉपिक इज़ व्हाट इन क्लास 10 यू ऑल आर मस्ट नो अबाउट द सम बेसिक टॉपिक अबाउट द इनहेरिटेंस जेनेटिक्स एंड यू ऑल आर नो अबाउट द डीएनए। आप लोगों ने नाम सुना है डीएनए का। आपको लगता होगा व्हाट इज़ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जेनेटिक्स। डीएनए का हमने नाम सुना, डीएनए होता क्या है। तो चलो अप टू 10 तक आपने जो भी पढ़ा हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही आप इंटर में आ गए तो इंटर में आने के बाद क्या होता है भाई, यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव सम स्पेसिफिक नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी जस्ट we just understand about the molecular basis of genetics, which is nucleotide, which is DNA. So we just start here. Our topic is genetics, and we just read about molecular form. This is not about the Mendelian concept. We just read about what? Molecular form of genetics. So you all are friendly about DNA. You all are friendly about this topic, DNA. आपने नाम सुना है इसका। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, इसी टॉपिक को इलेबोरेट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल, नॉट टिल टू एडवांस लेवल, बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। सो फर्स्ट मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिखने जा रहा हूँ। दैट वाज, जस्ट अ मिनट, दैट वाज Moisture. That was moisture. Actually, he is the first person who isolate nucleic acid in acidic form. And the source is what? If we obtained source here, so the source is pus cell. You all are know about pus cell, which is occur in our blood. When some injury occur, some infections occur, then pus is created on the wound area. Okay, so in pus cell he obtained some acidic, what he obtained? Acidic molecules. Okay, and you know this acidic molecule was termed by mixture that is nuclein. क्या कहा इन्होंने इसका नाम दिया nuclein. He called it nuclein. You know, this is very important question for NEET point of view. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है who discovered nuclein or who discovered nucleic acid and what nuclein term was given by, बताया जाता है. Okay, and the year was 1869. Okay, so nuclein term दिया इन्होंने, but on the basis of technical point of view, on the basis of some machinery point of view, technical devices are not available at this time. So we have no idea about the nuclein. We just know that it is a form of acidic form of molecule which occur in our body cells or blood cells or every different type of cells. Okay, now what will happen after discovery of tools or devices? Some elaboration take place. Okay, and elaboration was what? The first we have to change the name. इसका नेम बदला गया, और वो नेम किसने दिया भाई? He was Altman. He was what? Altman.
आपने नाम सुना होगा, अल्टमन एंड कॉलिकर, डिस्कवरर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so Altman said it what? Another name, which is the advanced name, that is what? That is nucleic acid. तो न्यूक्लिक एसिड आ गया, न्यूक्लिन से आ गया न्यूक्लिक एसिड. ओके, नाउ वी जस्ट कंसिडर अबाउट दिस मॉलिक्यूल. हम लोग अब इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. दिस इज द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या जान लिया? दैट in the form of nuclein mixture discover what? Nucleic acid from the source what? That is pus cell. source क्या था? source था pus cell. term क्या दिया गया? term दिया गया nuclein. कब दिया गया? at about 1869. okay, then after Altman provide that molecule as a new name, and that is nucleic acid. Okay, and if we consider about this DNA is nothing but it is a kind of nucleic acid. Okay, DNA is what? It is a form of nucleic acid. So we just elaborate this thing, that what is nucleic acid actually. If you further study that, this nucleic acid is basically of two types. The first one is, as I write, that is DNA, and the second one is what? That is RNA. Okay, these are the two basic form of nucleic acid available in our cell. Some other forms also, but these are two basic level. Okay, now we just move to the next slide. So what is actually nucleic acid? Actually, if we consider about this nucleic acid, chemically this nucleic acid, for chemical point of view, this nucleic acid is nothing that it is actually polynucleotide. This is actually polynucleotide. According to chemical point of view, it is what? Polynucleotide. So poly, देखो भाई, if you study biology, not only biology, even you science, if you study science, then this is very important that you must understand the term. Term का postmortem कीजिए, science समझ में आएगा. Same thing here. Poly means what? Poly is coming from a word that is called polymer. Okay, and we just say about nucleotide. Nucleotide क्या होता है भाई? पॉलीमर तो हम समझते हैं, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीमर समझते हैं हम लोग. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? सो इफ यू सी दिस न्यूक्लियोटाइड, you will find that this nucleotide can be distinguished into two different forms, two parts here. The first one is what? That is called nucleoside. Okay, and the next one is what? Phosphate. Nucleoside and what? Phosphate. Okay, so again this is a chemical, phosphate. Actually you all are know that phosphate is what? PO4 3 minus. This is phosphate. Okay, and what is the source of phosphate? The source is what? You all know about that. That is phosphoric acid. Phosphoric acid the source, and what is the formula? H3PO4. Okay, so this phosphate is coming from this. Okay, so nucleic acid, polynucleotide. Polynucleotide is what? Polymer of nucleotide, and nucleotide is what? Phosphate and nucleoside.
नाउ वी नो अबाउट द फॉस्फेट. फॉस्फेट हम लोग को पता है. अब थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? So if you distinguish that nucleoside, it is also made up of two types of things. The first one is you must know about sugar, and this is not a common sugar. जो आप general sugar लेते हो ना, that is not a common sugar. It is not sucrose actually. The sugar is actually what? Actually it is pentose. It has 5 carbon. Okay? We just elaborate this thing. What is sugar? हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. But I say it is made up of what? Sugar. And the next one is what? That is called N base, nitrogenous base. तो जैसे मैंने फॉस्फेट बताया, पहले सुगर की बात करते हैं. First we know about the sugar, and that is what? Pentose sugar. So just listen here. Pentose sugar. So पेंटोज शुगर का मतलब क्या हो गया भाई? C5H10O5. This is a common pentose formula. This is the formula of a common pentose. And this pentose are of two types. Okay? The first one is called as what? Ribose. And the second one is called as deoxyribose. Ribose and deoxyribose. Okay? So ribose is what? If you see the structure of ribose, you will find that it has this type of appearance. Here you carbon, 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 and here we have what? CH2OH. CH2OH. Okay? So here we have H, OH, H. You all know that this is alcoholic form. ये क्या है भाई? अल्कोहल है ना? Polyhydroxy form. Okay? So if you consider about the counting, देखो भाई, ये 1 कार्बन है, ये मेरा 2 है, ये 3 है. जस्ट मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ. So this is our 1, 2, 3, 4 and 5. अब भाई एक नई बात समझ लो. In sugar, this is you cannot simply say that 1. Here we say that 1 prime. सुगर के लिए देखो ये टर्म यूज किया जाता है 1 प्राइम. एंड 1 प्राइम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 डैश. सो वी सिंपली से 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ऐसे करते हैं हम लोग. सो दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम. ओके? एंड इफ वी कंसिडर अबाउट दिस वन डीऑक्सीराइबोज, देयर आर सम डिफरेंस. देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, शब्दों का पोस्टमार्टम करो. डीऑक्सी, डी का मतलब क्या होता है? नहीं है, कम है ना? सो क्या कम है? क्या कम है? ऑक्सीजन. ओके? सो हेयर वी राइट फॉर्मूला हेयर. देखो भाई फिर से वो बेसिक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. CH2OH, हेयर वी राइट H, OH, OH. ध्यान देना एक बात को. Here H, and the prime is what? 1 prime. This one is 2 prime, 3 prime, 4 prime, and this one is what? 5 prime. Okay? So what is differences between ribose and deoxyribose? This is very important. You see that on second carbon OH occur, but on second carbon what will happen? Hydrogen occur. There is a lack of oxygen. So if you write the formula of this one, you will have what? C5H10 and O4. Here we have O5, here we have O4. This is ribose. This is what? Deoxyribose. So now I think that you must know about this sugar. अब ये sugar का postmortem हो चुका है भाई. आप समझ गए होंगे कि sugar क्या है ना? In the case of nucleic acid,
भाई शुगर क्या है, सारे केस की बात मैं नहीं कर रहा, इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड व्हाट इज शुगर एक्चुअली, आप समझ गए होंगे, है ना। सो इफ यू कंसिडर अबाउट दिस वन, अगर आप आरएनए का बात करोगे यू विल हैव व्हाट, राइबोज शुगर, और अगर आप डीएनए का बात करोगे यू विल हैव व्हाट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, दैट इज C5H10O4. This is the basic differences between DNA and RNA on the basis point of sugar. शुगर कैसा है, क्लियर है बात, आगे बात कर रहे हैं हम लोग अब। नाउ शुगर समझ गए आप, अब जरा बात कर लें किसके बारे में, अब जरा बात कर लें हम लोग किसके बारे में, एन बेस के बारे में, नाइट्रोजन बेस। अकॉर्डिंग टू नेम, बेस नाइट्रोजन का बेस है भाई। सो इफ यू सी दैट दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का बताया गया है। द फर्स्ट वन इज व्हाट, that is purine, and the second one is what, that is pyrimidine। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, फॉस्फेट लाया, हमने क्या किया, शुगर लाया, हम क्या कर रहे हैं, एन बेस लाएंगे, फिर ये सारे मॉलिक्यूल को एक दूसरे से क्या करेंगे, जोड़ना शुरू करेंगे, जोड़ेंगे, बनेगा डीएनए। जैसे ही जोड़ेंगे डीएनए बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड, फिर बनेगा क्या, फिर बनेगा न्यूक्लियोटाइड, फिर हम लोग बनाएंगे क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो purine and pyrimidine, we have two types of nitrogenous base, and if you see the molecular structure of purine and pyrimidine, you will find that this has nine member structure। okay, इसमें आपको क्या मिलेंगे, 9 रिंग्स मिलेंगे, डबल रिंग, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, है ना, डबल साइकिल आप देख रहे होगे। एंड वी हैव नाइट्रोजन हेयर, नाइट्रोजन हेयर, nitrogen here and nitrogen here। okay, and if you see pyrimidine you will have single cyclic structure। actually आप देखो जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको बताया जाएगा कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, है ना। तो आप देख रहे हो ये क्या है भाई, ये कार्बन है, ये सब कार्बन है, ठीक है ना, और नाइट्रोजन है, मतलब रिंग के अंदर कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है ना। दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। हियर वी हैव नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड हियर वी हैव व्हाट, कार्बन। अकॉर्डिंग टू रूल्स यू जस्ट सेट द बॉन्ड हेयर, बॉन्ड को सेट कर देना है हम लोग को, ठीक है। सो प्यूरिन इज व्हाट, double cycle, double ring structure। pyrimidine is what, single ring structure। this is basic point of view, है ना। now what, if you see that purine is of two types। purine कितने टाइप का बताया गया, दो टाइप का, A and G। this is not only simple A and G, this one is adenine, this one is what, adenine, and this one is what, guanine, adenine and guanine। okay, now if you consider about the pyrimidine, so you can simply divide it into three type का होता है ये, simply you write CUT, that is CUT। what is CUT, this is cytosine, this is uracil, and this is thymine। cytosine, uracil, thymine, CUT। आप ट्रिकली में ट्रिक भी कर सकते हो, याद देखो, अप्पू जी याद होगा ना, अप्पू जी, ओके, हो जाएगा, एडेनिन, प्यूरिन, गुआनिन, एंड दिस वन इज कट,
Okay, pyrimidine cut. Okay, so now if you observe the molecular form of purine and pyrimidine, you will simply say that purine is double ring structure, pyrimidine is single ring structure. Both are heterocyclic. And what occur inside the ring? रिंग में होता क्या है? रिंग में कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होता है. रिंग में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन होता है. Now if you consider about adenine and guanine, you will find that there are some basic differences. The first one is adenine. Actually this has amino group. इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? amino group. And if you observe the guanine, that is methyl group. इसमें आपको क्या मिलेगा? methyl group मिलेगा. amino group, methyl group. Okay, and what about the number of carbon here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 1 2 3 4 5. Just a minute. 5 and 6. Okay, so this has how much carbon? कार्बन की संख्या कितनी है? देखो भाई 1 2 3 4 5. And what about nitrogen? कितने नाइट्रोजन है भाई? 1 2 3 4. 9 ring structure. 9 in a ring, 9 different elements are available. 9 elements are available. Out of that 5 is carbon and nitrogen is 4. If you observe this one, you will have what? The number of carbon is how much? Listen, 1 2 3 and 4. This one is also carbon. Just try write it. This one is also carbon. Okay, so how much? How much? That is 4. And how much nitrogen? That is 2. This one is nitrogen and this one is nitrogen and carbon is here. Okay, so this is about what? Pyrimidine. Now हम लोगों ने समझा N बेस क्या होता है. अब हम लोग देखो भाई, अब हम लोग समझने वाले हैं हाउ डज N बेस कंबाइंड विथ सुगर, पेंटोज सुगर. N बेस पेंटोज सुगर के साथ कैसे मिलता है? चलिए इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव. Now simply I have to write that N base with what? Sugar. What type of sugar it is? It is pentose sugar. Okay, and the product will be formed what? And the product will be formed nucleoside. एग्जाम्पल देखते हैं. एन बेस मान लो मैंने ले लिया क्या? एडेनिन. मैंने क्या लिया? एडेनिन. एंड द सुगर इज ऑफ 2 टाइप्स. जस्ट अ मिनट, आई so we have take N base, okay, and plus what? Sugar. Oh, ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है. So we have take what? Adenine. Adenine, and we have 2 options for sugar. Okay, the first one is what? Ribose sugar, and the second one is what? Deoxyribose sugar. We have 2 options. Yes, now it is correct.
ribose and deoxyribose. We have two options for sugar. So when this adenine combined with ribose, ध्यान देना है, देखो राइबोज किससे बिलोंग कर रहा था? राइबोज एक टाइप का कैसा शुगर है भाई जिसमें OH ग्रुप था सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड प्राइम पे OH ग्रुप था. एंड इफ यू कंसिडर अबाउट द एडेनिन, तो एडेनिन बिलोंग टू व्हाट? प्यूरिन. ओके, सो नाउ लिसन, when adenine and ribose sugar combine together, the product is adenosine. Product क्या होगा? Adenosine. But if you have deoxyribose sugar, so simply we say what? हम लोग क्या बोलेंगे? देखो ये एडिनोसिन है. कैसा एडिनोसिन है? जिसमें कैसा लगा हुआ है? राइबोज लगा हुआ है. So simply we can say that actually it is ribose type. But if you observe that deoxyribose attached to with adenine, that is called what? Deoxyadenosine. हम लोग इसको क्या बोलेंगे? Deoxyadenosine. This is simply adenosine or riboadenosine. You can say it. Okay. Now, if you have guanine, again we have two options, ribose and deoxyribose. ठीक है ना? Now what will we form? Guanosine, riboguanosine. We can say it what? Deoxyriboguanosine. देखो भाई इसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, सीन. जबकि मेरा क्या है? ये दोनों क्या टाइप था? इस दोनों का टाइप क्या था? प्यूरिन. ये दोनों क्या है? प्यूरिन है. बट इफ यू कंसिडर अबाउट पायरिमिडीन, अब देखो मैं पायरिमिडीन ले रहा हूं. हेयर आई टेक पायरिमिडीन. हेयर आई टेक पायरिमिडीन. So we take simply what? Cytosine. याद होगा आपको? pyrimidine cut है ना? That is what? Cytosine. Cytosine here. And cytosine combined with what? Cytosine combined with ribose sugar. ध्यान रखना. अब देखो अब समझने वाली बात आएगी. So when cytosine combined with ribose, we simply say it cytodine. देखो भाई ये चीज, इसीलिए मैंने इसको घेरा था. देखो सीन सीन सीन, यहां हो गया डीन. क्यों हो गया डीन? डीन बिकॉज इट बिलोंग्स टू पायरिमिडीन, नॉट बिलोंग टू प्यूरिन. प्यूरिन से जब बिलोंग कर रहा है तो ये आ रहा है. पायरिमिडीन से बिलोंग कर रहा है, देखो आ रहा है. सो साइटोसिन हमने समझा. साइटोसिन के बाद हम लोग क्या समझेंगे भाई? यूरासिल समझेंगे, है ना? और यूरासिल जब राइबोज से करेगा या फिर डीऑक्सीराइबोज से करेगा, अगर डीऑक्सीराइबोज से करता है यू सिंपली ऐड इट डीऑक्सी. राइबोज से करेगा राइबो. ओके, सो व्हाट विल वी फॉर्म? व्हाट विल वी फॉर्म? दैट इज यूराडीन. अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि जैसे साइटोसिन हुआ भाई, यूरासिल हुआ भाई, क्या थाइमिडीन होगा? क्या थाइमिडीन होगा? बिल्कुल होगा. थाइमिडीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मैंने अभी बताया कि क्या हो सकता है? पायरिमिडीन में टाइप हो सकता है, यूरासिल हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिडीन होगा. बट थाइमिसिन पॉसिबल है क्या? थाइमिसिन पॉसिबल है क्या? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थाइमिसिन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थाइमिसिन थाइमीन डीएनए में पाया ही नहीं जाता है. थाइमीन डीएनए में पाया ही नहीं जाता है.
है ना। तो फाइनली क्या है भाई, यही बातें आपको याद रखनी है ना। जस्ट अ मिनट, आई हैव सम मिस्टेक। I have some mistake here. As I write that pyrimidine, uracil occur, that is uridine. Yes. You know, not about thymidine, that is uridine. अभी देखो वहाँ लिखा हुआ uridine. If you see the structure of RNA, just a minute, we have what? RNA, okay, and we have what? DNA. One basic thing समझिएगा, if you have idea about nucleotide, we just have fresh slide here, थोड़ा fresh slide पे बात करते हैं. So I say what? RNA and DNA, okay, and we just know about the nucleotide here. मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ. So in DNA you will have what? Purine and pyrimidine, okay. So in DNA you will have what? Adenine and guanine, as I previously said that. And if you observe in DNA, you will have actually you will have cytosine and thymine, okay. Now here is important thing, that in DNA यही मिस्टेक था, है ना. डीएनए में यूरासिल नहीं होता है. मैंने आपको बता दिया था थाइमिन नहीं होता है, नहीं, एक्चुअली यूरासिल नहीं होता है, ओके. एंड इफ यू कंसिडर अबाउट दिस आरएनए, यू विल हैव again what? Purine and what? Pyrimidine. So purine is of so first of all pyrimidine and purine. Purine is of two types here. The first one is what? Again we have adenine, simply we write A, and what? Guanine, simply we write what? G. But if you consider about the pyrimidine, in RNA, that is cytosine, we have uracil, okay. So if uracil is belong to what? RNA, then how does the uracil combined with deoxyribose sugar? Just a minute.
deoxyribose sugar. So this is not possible. Okay, this is the real thing. Now we just move to the next slide. So first we just considered about the particle of DNA molecule. So we have what? Sugar. What kind of sugar it is? Pentose or deoxyribose. Now we have just this is a kind of bond. So I change the color of this bond here. Okay, so here we have N base. Okay, and this is what? Nucleoside. This is what? Nucleoside. Now you see the molecular structure here. So we have this type of a structure, CH2OH, H, H, OH, H, H, H and OH. Now this is 1 prime, this is 2 prime, this is 3 prime, this is 4 prime and this is 5 prime. Okay, so this is very important, 1 prime. Okay, so if you observe this 1 prime and in N base, अब मैं N base की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा सा N base को. We have this type of a structure. Okay, now you see about the nitrogen here, whose number is 9, not prime actually, simply we say that 9. Okay, so here is a bond. So here is a bond occur between this one. Okay, means first prime, 1 prime of the sugar and carbon and nitrogen at what? 9th position. Now you see that what is called this bond. This is very important. So sugar combined with what? N base. There is a bond occur between them. Then it is called as nucleoside. Okay. So this one is called as, देखो भाई chemistry के अगर थोड़ी सी knowledge आप लो तो आपको पता होना चाहिए sugar, glucose. Okay. Sugar molecules are combined together with a glycosidic linkage. This is very important term. So here glycosidic linkage with nitrogen, that's why it is called as N-glycosidic linkage. This is called as N-glycosidic linkage. This is very important. 1 prime of the sugar and nitrogen on the pyrimidine is what? 9, at 9th position. This is very important. Okay, so now you must know about this term glycosidic linkage. Now if we have adenine, देखिएगा मैं बात कर रहा हूं adenine combined with sugar, so what will we form? Adenosine. Adenosine क्या है भाई? Adenosine is a kind of what? Adenosine is a kind of nucleoside. Deoxynucleoside है ये, है ना? Now
This adenosine combined with what? Phosphate. ये adenosine किससे combine करेगा? Phosphate से combine करेगा, है ना? How does it combine with phosphate? So we have adenine, we have sugar. Okay, so here we have sugar. Okay, 1 2 3 4 5, 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. Okay, and adenine combined with this one, as it has double ring structure. This bond is called what? Glycosidic linkage. So you see that 5 prime and 3 prime, this is very important site for the sugar. 5 prime and what? 3 prime. So if you see this 3 prime, you will have P double bond O. We will have this type of a structure. This is phosphate. This one is what? Phosphate. As you know that, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में yes, in this video we have idea about that phosphate. This one is phosphate. Okay, we have phosphate. So this phosphate combined with nucleoside. This phosphate combined with nucleoside, and then after what will form? Nucleotide will be formed. Then after nucleotide will be formed. So okay, so I am saying about this bond. Yes, I am saying about this bond. Okay, this bond. This bond is very important. This one is N base. Just I change the. This one is N base. This one is sugar, and this one is what? Phosphate. So N base and sugar combined with what? N glycosidic linkage. Okay, and this bond, we just know about this bond here. So the bond occur between the sugar and phosphate on which carbon? On 3rd prime. Okay, so this bond is very important for you all also. ये bond भी काफी important है आपके लिए, and this is called as Phospho Ester bond. This is called as Phospho Ester bond. Phospho आप समझ रहे होगे, Phospho भाई phosphorus है. अब ये Ester bond मैं क्यों बोल रहा हूँ? बहुत आसान है भैया, एसिड एंड अल्कोहल आपने पढ़ा होगा. एसिड और अल्कोहल जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? द प्रोडक्ट इज एस्टर. The product is called as what? Ester. So again what will happen? आप देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये शुगर में क्या है? यहाँ पे OH है ना, अल्कोहलिक ग्रुप है ना, और ये एसिड है ना. अल्कोहल एंड एसिड combine together to form a bond that is called what? Actually the compound is called ester, and this bond is formed due to formation of ester. Due to formation of ester type compound, that's why it is called as phosphoester bond. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? Phosphoester bond बोल रहे हैं. क्लियर है बात है? तो ध्यान देने वाली बात क्या है? This bond is very important for you all. That is between the N base and sugar. That is called what? N glycosidic linkage. The next bond is very important for you all. That is from 3 prime to the phosphate, and that is called what? Phosphoester bond. Okay, now
वी सिंपली दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ना, इस मॉलिक्यूल को ही हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है ना। हमने क्या किया, हमने फॉस्फेट लाया, हमने शुगर लाया, शुगर का वैरायटी लाया, 2 types of sugar, ribose and deoxyribose. There are some differences between these two molecules. Okay? फिर हमने क्या किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वी हैव टू रिक्वायर बॉन्ड, हमने बॉन्ड का इस्तेमाल किया है। सारे लोगों को जोड़ा और क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट विल हैपन, these nucleotides are combined together, polymerization occur here। ये न्यूक्लियोटाइड जो आप देख रहे हो ना, इसका पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा, और जब ये पॉलीमराइज करेगा तब बनाएगा क्या, डीएनए, या फिर ये आरएनए भी बना सकता है। ये डीएनए भी बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हाउ डज डीएनए एंड आरएनए। अभी मैंने पूरा इसको अभी जब अभी हमने डीएनए नहीं बनाया है, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है ना। अब हम लोग इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि हाउ डज डीएनए विल बी फॉर्म, हाउ डज आरएनए विल बी फॉर्म्ड, है ना। डीएनए कैसे बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे सेट्स ऑफ रूल हैं, जैसे चार्गप्स रूल हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल की बात करेंगे, है ना। तो ये सारी बातें करेंगे। तो आई थिंक अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।